Hey guys, I'm here and today I'm here to explore a cute and small barbershop in my town. Hello Vinod ji, कैसे हैं? ठीक. So I'm seeing this shop from last 10 years I think. मैं almost इस shop को 10 साल से मैं देख रहा हूँ. हाँ तो हम 2000 से हैं करीब यहाँ में. 2000 से. हाँ 23 साल हो गए आपको यहाँ. 23 साल हो गया. और मुझे ये बार्बर शॉप बहुत अच्छी लगती है बिकॉज यू कैन सी ये क्वार्टर एरिया के बीच में है जो कि बहुत पीसफुल है. बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ से पार होती हैं और जनरली एक स्ट्रीट बार्बर शॉप को हम देखते हैं कि वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है. लेकिन हर जगह मसाजेस लेने का अपना एक मज़ा है. तो आप बताइए कैसा चल रहा है ये? ठीक ठाक है, चलता है. अभी मार्केट के बीच में नहीं ना है ये, जो है एक कॉलोनी के बीच में है. हाँ. तो कॉलोनी के बीच में जो है आदमी जो है फिक्स कस्टमर जो है जो पुराना है 25 साल 30 साल 20 साल वही सब मेरे पास कस्टमर आता है. तो कम से कम 20 साल का है, 25 साल का, 30 साल का भी. तो सबसे एक तरह का रिलेशन बन चुका है. हाँ, सबसे बन गया है. तो हम वही कस्टमर को उसी पर चल रहा है मेरा. और कितने साल से आप इस बार्बर लाइन में? हम तो कम से कम हम 86 से शुरू किए हैं काम. ओके, 86 से. हाँ. आपका नाम जैसे विनोद शर्मा है जी. एंड तो आप मतलब कि आपके पूर्वज वगैरह जितने भी जी, सब बार्बर लाइन में हम लोग हैं. अच्छा, नाई सब लोग यही करते हाँ, थे. हमारे ओके. बाबूजी भी पिताजी भी करते थे. अच्छा. हमारा 2 भाई है दिल्ली में. अच्छा, तो उनका भी बार्बर शॉप है. हाँ, उन लोग भी वही काम करता है. उन लोग भी यही काम करता है. उन लोग भी. चलिए. हम 4 भाई हैं. छोटा वाला भाई बिजली विभाग में है. अच्छा. और हम जो हैं सबसे बड़े हैं. और मेरा 2 भाई और है छोटा. उन लोग एक मंजिला है एक सांजिल है. वो दोनों दिल्ली में. So there are two way to enter into this shop. For customers from here we can enter and another one you can show this area which barber only use. ये आपकी साइकिल है? हाँ. मतलब ये साइकिल से आप आते हैं? कितनी दूर से आते हैं आप? 4 किलोमीटर से. 4 किलोमीटर. गुड फॉर हेल्थ. सो नाइस व्यू. This is what I like the street barber shop. When I came to him day before yesterday, I told him that we are YouTubers and basically we explore this kind of barber shop. So he said, my shop is very small. What you are going to explore? I said, my viewers want to see a core barber shop of India and how they started, how they build up, and how they are living their life, by barber life. So for that only we are here, and I prefer head massages basically because that's my passion to take. And he said I'm good in haircut and I'm good in fact in beard shape and so many things. But don't know how the viewers will like my head massage or not. So let's take the head massage and see the skill of this barber. विनोद, चलिए आज मैं आपसे हेड मसाज लूँगा. ठीक, आइए. This shop is very small, but the way he organized each and everything, looking so good, neat and clean. थोड़ा सा नीचे को बढ़ गई हल्का.
नहीं। सुनिए मेरा हाथ तो सुनिए, मेरा हाथ तो सुनिए ना। फिर सो जाइएगा, सो जाइए, बच्चे जैसे सोता है वैसे सोइए ना, सोइए, नहीं सीधा, फिर सोइए ना। आया जी, ठीक। कान भी पुटका दिया जाए। टाइट कर दे रहे हैं आप ये वाला, टाइट मत कीजिएगा, टाइट कीजिएगा उधर उधर जाएगा।
लास्ट पे हम्म? चलिए रखिए नीचे। फेस वॉश रखे हैं। हाँ 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 लगा रहा। रुई नहीं लगा, हाथे से लगा दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। ओके। नहीं बोलिएगा तो रुई फिर कॉटन भी है मगर नहीं चलेगा।
कॉटन से पोंछ दें। जैसा आप पूछ टिश्यू पेपर मार दें प्लास्टिक। और कुछ Thank you. Thank you. So guys, it was really a good massage, and apart from two things, I really like this massage, and after a long time
I'm getting a massage with a complimentary of birds chirping. You must be here in a video that in the background there is a bird chirping sound you are getting. So that is giving me more relaxation, and only the things which I don't like, that he was hitting little hardly on my temple area, which is making little bit of pain in my vessel. So apart from this, it's a good massage, and it's a super intense one. And let me tell you, super intense massage is very good while you're going for a work, because that will make you re-energized and boost your tiredness. It will give you energy and reduce your tiredness. So it's a good massage. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब मैं बस इतना ही बोलूँगा। आप थोड़ा सा हार्ड थे यहाँ, थोड़ा सा आप यहाँ थोड़ा जोर हो जा रहे थे, जो कि लेट मी टेल यू गाइज कि it's a old school barbershop, and he's an old barber. And पहले के टाइम में कैसा होता था, जो मसाजेस जो बेसिकली होते थे, दो ही लोगों को दिए जाते थे, एक तो पहलवानों को और दूसरा जो काम करते थे नॉर्मल लोगों को। जो पहलवान को देते थे वो थोड़ा ज़ोर से होता था, क्योंकि उनका जो मसल्स इतना थिक होता था कि उनको थोड़ा ज़ोर से मसाज चाहिए होता था। तो इट वाज अ गुड मसाज। थैंक यू सो मच। फिर विज़िट करेंगे आपके यहाँ। ओके गाइस।